Let's do a prayer and invocation to the Supreme God, to the great Divine Father and the great Divine Mother. Thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine power, divine healing, guidance, mercy, help, and protection. We thank you. To our spiritual teacher, to all the spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great ones, we very humbly thank you for your great blessings. Thank you so much. Especially to the great Swami Rama, to the great Babaji, we very humbly thank you. And to all the great Himalayan masters, we very humbly thank you for your shower of priceless blessings. We very humbly are grateful to you. Thank you so much. Thank you. All right. So हमने last time जो पढ़ा था, by the way, invocation इंग्लिश में होती है, invocation किसी और लैंग्वेज में मुझे आती भी नहीं है. So हमने लास्ट टाइम उनके जो काफी डिस्क्रिप्शंस हैं लोगों के, पहाड़ों के, वैलीज के, प्लांट्स के, फ्लावर्स के, इसके उसके अलग अलग वो चीज़ें पढ़ी थी कि हिमालयन के रीजन्स में किस तरह की चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होता है. आज जो है हम थोड़ा सा और उसके आगे पढ़ेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं. आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ना हिमालय के जो लोग हैं, जिस तरह से रहते हैं, उसका विवरण दे रहे हैं एक्चुअली. इस तरीके के लोग हैं, इस तरह का वेजिटेशन है, इस तरह की वैलीज हैं, इस तरह के एनिमल्स हैं, इस तरह का वो एक सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सीन डिस्क्रिप्शन के जैसे कि कोई पिक्चर होती है, आप उसमें स्ट्रेट अवे मर्डर पे चले नहीं आते हो ना. मर्डर धीरे धीरे होता है, लाइक कोई कोई रीजन, कोई प्लॉट कुछ होता है. आप पहले लोग दिखाते हो, उनके लाइफ स्टाइल आप दिखाते हो कि अच्छा ये वो अपनी लाइफ में ये करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं ना. देन कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर कुछ समथिंग लाइक दैट, इट मूव्स लाइक दैट यूजुअली. तो अभी सीन सीन का डिस्क्रिप्शन चल रहा है वहां पे एक्चुअली. चलिए आगे चलते हैं. Culturally, the Himalayas are not obstacles and do not create any barrier to the countries situated on the either side. There are hundreds of communities and nationalities in these mountains which are conspicuous for the peculiarities in their ways of life, resulting from some unusual blend of Indian, Tibetan, and Chinese cultures. Different languages are spoken in different parts of the Himalayas. I could at one time speak Nepalese, Gadwali, Kumayuni, Punjabi, and some Tibetan, but I've never learned the Kashmiri language. Knowledge of these mountain languages helped me in communicating with the local spiritual leaders and herbalists. Good. The month of July is the finest month for traveling in the Himalayas. The snow and the glaciers are melting then, and there are thousands of streams rushing all over. It is not unpleasantly cold, and those who know the nature of glaciers, avalanches, and landslides can travel comfortably if they are careful. The dangers of the Himalayan mountains are the same today as they have always been. Avalanches, fast running streams and rivers, overhanging cliffs, and high towering snow covered peaks will not change their ways for any traveler. Nonetheless, the spiritual heritage of the Himalayas has long motivated travelers to explore their unknown wisdom. Over 1,000 years ago, hundreds of Tibetan and Chinese travelers took Buddhist literature from India and translated it to their own languages, thereby disseminating Buddhist teachings to their own countries. The great vehicle of Buddhism, Mahayana Buddhism, जिसको महायाना बुद्धिज्म बोलते हैं, passed across Himalayan borders, first to Tibet and then to China, greatly enriching Chinese culture and religion. The meditative traditions of Zen are aspects of the Buddhism that were then passed on to Japan. The original teachings were imparted by Indian teachers who traveled to Tibet and China 10 centuries ago, which means 1,000 years ago. The followers of Taoism and Confucianism adore the Himalayas
and the Himalayan teachers, for they have received much wisdom from those who traveled and lived in these mountains. The principle of inaction emphasized by Taoism is found precisely formulated in the Bhagavad Gita. The concept of nirvana, clearly presented in the early Indian philosophy, has influenced all the religions of Tibet, Mongolia, China, and Japan. Today, Tibet is a communist country, and it appears that its ancient wisdom and the culture based on it have vanished. However, the Dalai Lama and a handful of his followers have migrated to the foothills of the Himalayan mountains in India. तो पूरा विवरण दे रहे हैं कि वहाँ पे कि मतलब कि अलग अलग कल्चर्स के जो लोग हैं उनको जो टीचिंग्स मिली है वो इंडिया के थ्रू गई हैं, इंडियन टीचर्स लेके गए हैं वगैरह वगैरह, मतलब स्प्रेड थ्रू आउट। एंड एक टाइम पे आपको भी मतलब पता होगा कि तिब्बत में स्पिरिचुअलिटी पे, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी पे, यानी कि डीप मेडिटेशंस में भी और टू गेन स्पिरिचुअल पावर्स, उसके एरिया में भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए थे एक्चुअली। आपको आइडिया तो होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट। ब्लैक मैजिक बहुत मतलब प्रैक्टिस हुआ था वहाँ पे, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें वहाँ पे प्रैक्टिस हुई, मतलब उन लोगों ने लिटरली टू टेक हेवन बाय फोर्स का एक्सपेरिमेंट किया था कि दे वुड देयर कि हेड के सेंटर में एक पॉइंट होता है, उसको अगर आप प्रॉपरली स्टिमुलेट करोगे अगर, तो उससे यू हैव एक्सेस टू दी हेवन कॉन्शियसनेस। ठीक है, उस पॉइंट को अलग अलग नामों से अलग अलग रिलीजन में बोला गया है, और वो आमतौर पे मेडिटेटिवली स्टिमुलेट किया जाता है। आमतौर पे का मतलब द ओनली वे टू एक्चुअली स्टिमुलेट मेडिटेटिवली, उन लोगों ने सुई डाल के पूरा यहाँ से या पीछे से उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश भी की है फोर्सिबली। उसकी काम नहीं करती वो चीजें, बट दे ट्राइड एवरीथिंग एक्चुअली टू गेट to that nectar state, to that blissful state, that this state, that state, बहुत कुछ कोशिश की उन लोगों ने। Things haven't worked exactly in that sense. But anyways, my point is कि they've experimented a lot. बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए उन लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मालूम होना जरूरी है कि इनके जो डार्क मैजिक है उसका जिस तरह का कर्मा है वो अलग तरह का कर्मा है कंपेयर टू कि जिस तरह का वर्ल्ड हैज सीन अराउंड हैपनिंग। Let's go ahead. These mountains were my playground. They were like large lawns spread as though Mother Nature had personally looked after them so that her children who live in the valleys would remain happy, joyous, and aware of the purpose of life. It is there that one can come to understand that from the smallest blade of grass to the highest of the mountain peaks, there is no place for sorrow in life. My 45 years of living and traveling with the sages of the Himalayas under the guidance of my Gurudev enabled me to experience in a few years that which normally would not be possible for anyone to experience in several lifetimes. Wow. I was able to do so because of the grace of my beloved Master, who wanted me to experience, choose, and decide for myself. This series of experiences and my learning with the sages have helped me to attain and maintain center of awareness within. I will tell you how I grew up and how I was trained about the great sages with whom I lived and what they taught me, not through the lectures and books, but through experiences. The stories collected here are a record of some of these experiences. Whenever I want to tell a story to the world, I think that the world itself is a story. I pray that others may benefit from these experiences also, and that is why I talk about them as a lecture and teach. I always say to my students, what is that which is mine, and what is that which I have not surrendered to thee? From these spiritual stories, learn that which is useful for your growth and start practicing it.
And that which is beyond your grasp, leave it for now with the narrator. Memories of these experiences awaken me even today, and I feel the Himalayan mountains are calling me back. ये जो इसमें जो टेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है कि द कॉल ऑफ द माउंटेन्स, ये सेम पुल जो था वो उनका भी था, क्या बोलते हैं, परमहंस योगानंद का भी था। ही वाज, उनको भी लगता था कि माउंटेन माउंटेन माउंटेन, देखो कभी पहले वाले इनकारनेशन में उन्होंने वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डीप लॉन्ग मेडिटेशन की होंगी एक्चुअली, राइट। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड कॉलिंग ऑफ द सोल, मतलब एक होता है सोल की कॉलिंग, स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इस इनकारनेशन में कुछ लोग जो है आर कॉल्ड इंटरनली फॉर सर्विस। अभी मैं किससे मिल के आ रहा हूँ, दैट पर्सन इज ड्रिवन टू सर्व, ड्रिवन टू स्प्रेड प्राणिक हीलिंग। ही इज वेरी न्यू इन द स्कूल, वेरी न्यू का मतलब ही इज रफली 1.5 year in the school of pranic healing, but it's driven to create a change internally, so driven कि I'm like वाह यार, वाह वाह क्या बात है, ऐसे लोग मतलब जब साथ में काम करते हैं ना, तो it creates wow environment actually कि you get lifted up, something like that. He is 25-26 years old और उतना छोटा सा लड़का है, but he's pure, honest, and something qualities that you look up to actually, है ना। So there's a driving or a driven nature towards a purpose within him, for example. Similarly, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कि who are driven to meditate. आप सब काम अपना खत्म करके, छोड़ के नहीं, खत्म करके you want to meditate or you want to just be still. आप में से कुछ ऐसे होंगे who are driven to read and learn. ये सोल की कॉलिंग होती है, और कॉलिंग अलग अलग स्टेजेस में चेंज होती है। यानी कि एक टाइम ऐसा होगा कि आप 10 साल तक आपको पढ़ने का बहुत मन करेगा, रीडिंग, कॉलिंग ऑफ सोल। कोई एक टाइम ऐसा होगा जहां आपको मन करेगा कि ओके यू नो व्हाट, नाउ लेट्स मेडिटेट अ लॉट। एक टाइम आएगा जब आपको सर्व करने का मन करेगा। कॉलिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोल। व्हेन सो आज जब सोल काफी हद तक डेवलप करती रहती है, तो कॉलिंग चेंज होती जाती है, बिकॉज सोल ने वो स्टेज पास कर लिया ऑलरेडी। मेक सेंस या? सोल इज पास्ट दैट स्टेज जहां पे कि द कॉलिंग चेंजेस फ्रॉम ए टू बी टू सी। I hope this is making sense, right? Of course, everything has to be done in balance, but एक होता है pull, magnetism toward a specific activity. जैसे कि एक टाइम कभी ऐसा आ सकता है कि you are pulled towards one kind of meditation versus other techniques or other types of meditation. Inner calling, you know what? इस महीने मेरा मन कर रहा है कि मैं ये ज्यादा करूं कंपेयर टू वो। हो सकता है ऐसा। इन जनरल सब कुछ बैलेंस में करना चाहिए, बट अलग अलग टेक्निक्स होती है मेडिटेशन की। बहुत बार ये होता है कि यू गेट अट्रैक्टेड टू वन काइंड टेक्निक मोर देन द अदर। फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्निक जो होती हैं वो आपको अवेयरनेस दिलाती हैं, कुछ टेक्निक जो होती हैं वो आपको विल पावर या लव अवेकन करती हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो, कुछ इवेंट हुआ हो, एंड द सोल स्टार्ट्स टू गाइड यू, व्हाट, आई नीड मोर अवेयरनेस, लेट्स डू अवेयरनेस मेडिटेशन मोर। तो क्या होगा कि आपका जो इंक्लिनेशन है विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली गोइंग टुवर्ड्स अवेयरनेस प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली। सोल की कॉलिंग है उस टाइम पे। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। पहले की जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं आई वुड प्रैक्टिस, आई वुड ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग। 20 बट मतलब 2013-2014 की बात कर रहा हूँ। फिर 2015-16-17-18 तक ठीक ठाक चला। 1920 के आसपास आते आते 2019-2020 के आसपास मेरी जो इंटरेस्ट था वो अवेयरनेस मेडिटेशंस में, जिसको आध्यात्मिक योगा में बोलते हैं आध्यात्मिक ध्यान, उसमें ज्यादा बढ़ने लग गया। आई वुड डू दैट लाइक वंस एवरी डे या समटाइम्स 2 times एवरी डे। आई वुड डू दैट, आई वुड नॉट डू अदर्स एज मच एट ऑल। 2-3 महीने का फेज था वो बीच में। जो वो फेज निकल गया तो उसके बाद एवरीथिंग रिस्टोर टू बैलेंस। फिर एक टाइम आया कि बिल्कुल भी अवेयरनेस करने का मन नहीं कर रहा था। आई थिंक वो 6 months का एक पीरियड था कि मैंने 1 या 2 बार ही किया होगा बस। जो फेज निकल गया, एवरीथिंग केम बैक टू बैलेंस।
कभी कभी देर इज अ पुल ऑफ द सोल कि चलो ये करते हैं, इसकी सोल को कोई नीड होगी उस टाइम पे, एक्चुअली उस टाइम पे कोई ना कोई नीड होगी एक्चुअली, हमें नहीं पता कि क्या नीड है, वी जस्ट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वी गो अलोंग, राइट? सो ये जो मतलब इसमें जो व्याख्या कर रहे हैं कि जो है, मैंने आपको जो स्टोरीज सुनाई हुई हैं ग्रेट सेंस की, ग्रेट सेजेस की, ये जो है एक अलग अलग लाइफ के लेसन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि स्टोरी से अच्छा कोई माध्यम नहीं है इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का। जैसे कि जातक कथाएं जो होती हैं वो पूरी स्टोरी बेस्ड होती हैं, एम आई राइट? यस, जातक कथाएं, या, थैंक यू, स्टोरी बेस्ड होती है, राइट? पंचतंत्र की जो होती है वो भी आई थिंक स्टोरी बेस्ड होती है, राइट? बिकॉज स्टोरीज, आप जब बच्चों को बोलते हो कि सच बोलो, तो आप सिर्फ सच बोलो नहीं बोलते, आप उसको स्टोरीज के साथ बोलते हो कि सच बोलने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पाथ कैन बी डिफिकल्ट व्हेन यू टेक द पाथ ऑफ ट्रूथ, बट स्टिक टू इट। उसमें ऑनर है, उसमें इनर स्ट्रेंथ है, उसमें कहीं झुकना नहीं पड़ेगा, यू हैव टू बी, यू विल शो द वर्ल्ड इन स्टोरी फॉर्मेट। एंड बाय द वे, स्टेटमेंट्स इंस्पायरिंग नहीं भी होंगे, स्टोरीज पक्का इंस्पायरिंग होगी। जो रिजॉल्व होता है कि यू नो व्हाट, आई लाइक दिस एंड आई विल डू इट, वो स्टोरीज जब इंस्पायर करती हैं तब जाके आता है। ऐसा हो सकता है कि आपने एक स्टोरी आपने 6 साल पहले सुनी हो, 6 years बिफोर, बट आपकी डीप मेडिटेशन में दैट स्टोरी एंटर्ड नाउ, लाइक वाओ, दैट दैट वाओ फैक्टर अब जाके आया। होता है, बहुत बार होता है ऐसा। वो वाव फैक्टर का मतलब है कि द स्टोरी का जो डीप मीनिंग है वो अब रजिस्टर हुआ है, अब जाके, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो स्टोरीज इज द मैकेनिज्म जो इन्होंने चूज किया है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। ऑलराइट, नाउ आई थिंक वी आर एग्जैक्टली at this, you see the cursor here, right? This we are right about here at the moment. I think 10% of the book is over approximately, right? Let's go ahead. My gurudeva and parents. My father was a well-known, learned Sanskrit scholar and a highly spiritual man. Mostly Brahmins lived in his village, and they would come to my father for consultation and to study with him. My parents were moderately wealthy and generous landowners. My father did not plow his fields himself, but would share the yields with the field workers who did. For 6 months, no one had known where my father was, and his family had concluded that he was either dead or had taken a vow of renunciation. Actually, he had gone on a very long retreat because he was having problems with his spiritual practices. He was meditating intensively in the forest at Manasadevi, not far from Hardwar. My master, on a trip which took him by Manasa Devi, arrived one evening at the place where my father was staying. Upon seeing my master, he knew immediately that this was his gurudeva. Often, in such initial contact between master and disciple, the two hearts respond and spontaneously open to each other. This can happen with only the contact of a single glance. Thereupon, be, uh, thereupon begins communication without action or speech. My master stayed there for a week, guiding my father and finally instructing him to return to his home, which was at the height of about 5,500 feet in the hills of Uttar Pradesh. Wow. तो थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं. My mother had given up hope of her husband returning and had started an intensive practice of austerities. When my father returned, he told her about his experiences with the master who had initiated him at Manasa Devi. He told her that his master had said that although they were 43 and 60 years old, they would have a son
who would also follow him. Wow, the lady was 43 years old, the man was 60 years old, and the spiritual master told him that they would have a son who would also follow him. This is amazing. 2 years later, my master came down from the Himalayas to my parents' village and visited their home. My father was having dinner when my master arrived, and my mother answered his knock at the door, which means mother उस time पे 45 years की हो चुकी होगी, 2 साल के बाद ना. My mother answered knock at the door. Without knowing who he was, she requested him to please wait because her husband was taking food and she was serving him. Upon hearing of a guest's arrival, however, my father left his meal and rushed to the door. My master said, I have not come to eat or accept your hospitality. I want you to give me something. My father replied, anything I have is yours. My master said, I need your son. Wow. Wow. That's amazing. My parents responded, for us to have a son at our ages would be a miracle. But if we can have him, he will be yours. 18 months after this meeting, I was born. कितना अमेजिंग है ना. लेट्स क्विकली गो थ्रू एक बार, ठीक है. इनके जो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मास्टर जो कि let's understand it like this, okay? For example, जब भी किसी भी एक पावरफुल सोल को बॉर्न होना होता है प्रॉपरली, उसके लिए क्या होता है कि देयर इज अ, ये मैंने सुना हुआ है, आई एम नॉट एक्चुअली श्योर कि हाउ टू वैलिडेट दिस, बट whenever an evolved soul has to take a birth, there is some amount of conditioning or training that the so-called parents have to undergo. इसीलिए आपने देखा कि वो जो पेरेंट्स थे, दे अंडरवेंट स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फॉर कितना 6 महीना ऑफ द फादर एंड सम ऑस्टेरिटीज बाय द मदर, राइट? ट्रेनिंग ऑफ द बॉडीज टू गेट प्यूरिफाइड एक्चुअली, कि वो इतनी पावरफुल सोल को लेके आ सके अपने थ्रू. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या है कि एज मैटर नहीं करती है. आपको याद होगा कि एब्राहम थे या मोसेस थे या आई डोंट नो, वन ऑफ देम एक्चुअली, जिनकी वाइफ आई थिंक 60+ की हो चुकी थी, एंड सो कॉल्ड लॉर्ड जीसस अपीयर्ड आई थिंक, एंड ही टोल्ड हिज वाइफ कि यू विल बियर अ चाइल्ड. एंड वो लेडी बोलती कि लॉर्ड आई एम ऑलरेडी अबव 60 years old, आई एम माय बॉडी इज नॉट यू नो सो एंड सो. शी लाइक, he says कि you and nobody else will bear a child. Anyways, of course she bears a child and all of that. And what I'm trying to say is कि जब भी कोई एडवांस वर्ल्ड बोर्न होने वाली थी ना, तो उसके पीछे रीजंस होते हैं, उसके पीछे ये एज वगैरह चीजें मैटर नहीं करती. उसके बाद यू बायोलॉजी साइड में आती है, उसके बाद थिंग्स वर्क. इंटरेस्टिंगली ये होता है कि इन सोल्स के पर्पसेस होते हैं. मतलब है कि अ ग्रेट टीचर विल यूज mechanism of your bodies, you the couple, train you to a specific point कि आपको जो है वो आपकी बॉडीज का मैकेनिज्म यूज करके वो ही कैन गेट द ग्रेट सोल डाउन, ट्रेन दैट सोल एंड मेक हिम फॉर बेटर यूज फॉर द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड की सेवा के लिए आपकी बॉडीज का यूज किया जाता है, ठीक है. अच्छा, इस केस में एग्जैक्टली ऐसे हुआ है. एंड 45 ईयर्स की एज हो, मतलब होते होते उसके भी 18 मंथ्स के बाद, 46.5 अप्रोक्सीमेटली, जब उसकी मदर थी तब जाके, और उसके फादर आई थिंक 63.5 के हो चुके होंगे, तब जाके दिस सोल वाज बोर्न. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इफ यू डू डीप इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अगर आप कोई बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो अपनी, तो यू एक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है अपनी बॉडीज को ट्रेन कर रहे हो पावरफुल सोल को लाने के लिए. हो सकता है, हमेशा हर केस में ऐसा नहीं होगा, पर हो सकता है. दिस अ गुड पॉसिबिलिटी. देन आगे चलते हैं. The day I was born, my master arrived at our house and asked my mother to hand me over to him. As a protective new mother, she was reluctant to comply, but my father asked her to do so.
After holding me for a few minutes in his arms, my master handed me back and instructed, "Look at him. I will come again later and take him with me." 3 years later, my master returned and initiated me by whispering a mantra in my right ear. I told him that I already knew the mantra and had been remembering it all the time. He said, "I know. I'm only confirming that which you remember." As a young child, I was not at all attached to my parents, but I remembered my master all the time and was constantly aware of his presence. I thought of him so much that sometimes my parents seemed to be strangers. I always used to think, I do not belong to this place and to these people. From time to time, my mother used to look at my right ear to see the hole which was there by birth. It was a mark that my father had predicted before I was born. At times, my mother used to weep, saying, "One day you will leave us and go away." I loved my mother, my father. I loved my mother and father, but I really used to wait for that day. I remembered at an early age that the purpose of my life was the completion of the unfulfilled mission of my previous life. As a child, I clearly remember details of my past life. Wow, wow. आगे चलते हैं. I was awakened every night because my master would appear in my dream again and again. This upset and worried my parents, and they consulted priests, doctors, and astrologers to discover what was wrong. But through a messenger, my master told them not to worry, for there was nothing wrong with me. There were two old widows in the same village with whom I used to sit and talk about my future plan. They were very holy. They used to advise me to go to junior high for studies. Actually, they persuaded me, but soon I left the school and did not go back. I thought it was useless for me to waste my time in such a school. मतलब स्कूल भी उनको जाना सही नहीं लगा, क्योंकि उनको लगा कि जो है मेरा वहाँ पर टाइम जो है वेस्ट हो रहा है उनका, बिकॉज मास्टर की टीचिंग्स और मास्टर का जो प्रॉपर जो गाइडेंस था वो स्कूल में मे बी द टीचिंग्स वरंट इन अलाइनमेंट विद व्हाट ही प्लान्ड ऑन डूइंग, राइट. और उनके वहाँ पे मतलब देयर वाज सम पीपल इन दिस विलेज जिनसे वो प्रॉपरली बात किया करते थे. एंड एक टाइम ऐसा भी आया कि जब वो हर रात को ही वुड जग जाते थे, क्योंकि उनके मास्टर जो है बार बार उनके ड्रीम में आते थे एक्चुअली. एंड उसके पेरेंट्स ने मतलब प्रीस्ट को जाके दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया कि क्या चल रहा है भैया, हमारे बच्चे के साथ कुछ बताओ. एंड फिर मतलब उनके मास्टर ने एक मैसेंजर के थ्रू ये पेरेंट्स को कन्वे करवाया कि कुछ गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो ऐसा हुआ. याद है हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर हैं जिनका नाम मास्टर चौकॉक्सवे है, जब पहली बार इनर एक्सपीरियंसेस होना स्टार्ट हुए थे, इवन इज स्टिल टीनेज की एज में, तो ही वुड कम आउट ऑफ हिज बॉडी एंड ही वुड गो ट्रैवलिंग एंड डू हिज वर्क एंड लर्न एंड टीच एंड व्हाटएवर जो कुछ भी है, ही वुड डू ऑल ऑफ दैट एक्चुअली. दे वुड कम बैक. एंड इनिशियल डेज में जब स्टार्ट हुआ था तो ही वुड कि क्या क्या चल रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है टाइप्स, राइट. बिकॉज कैथोलिक रिलीजन के थे उस टाइम पे, और वहां पे ये सब सिखाते नहीं है. और जब पहली बार जब ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो द माइंड कम्स इनटू अ क्वेश्चन कि क्या चल रहा है. सो दिस वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एक्चुअली. नाउ after a few years my parents died and I went to my master. My master started disciplining me, although it was difficult for him. I rarely missed uttering the word father because I was not at all attached to my physical father. I never missed him because I was given more by my master than a father can ever give to a child. My master is not only like a father to me, but far more than that. मतलब ये बेसिकली अपने मास्टर को भी फादर बुलाते थे.
एंड उनके पेरेंट्स काफी जल्दी चल बसे थे। देखिए आपने देखा है रामकृष्ण परमहंसा, इनकी मदर जल्दी चल बसी जब वो 9 साल के थे। योगानंद परमहंसा जब वो छोटी अच्छी थे उनकी मदर चल बसी थी। इनके भी पेरेंट चल बसे। क्या होता है कि आप, अगर आप अपनी मदर से ज्यादा अटैच्ड हो, फॉर एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, अगर आपकी मदर को, इफ गॉड टेक्स अवे योर मदर, तो वो सेम डिवोशन सेम अटैचमेंट जो है टर्न्स टू डिवाइन मदर। सेम डिवोशन सेम अटैचमेंट टर्न्स टू डिवाइन मदर, राइट? हाउएवर इस केस में क्या था कि ये अपने मास्टर से ही अटैच थे। व्हेन द पेरेंट्स व्हेन दे लेफ्ट द बॉडी, फिर देन ही नेचुरली मूव्ड जहां पे मास्टर थे, ही नेचुरली मूव्ड ओवर देयर एंड in a natural sequence of things, things took him to Himalayas very, very naturally. Any thought that came to mind, he knew. If I thought of not doing meditation, he would look at me and smile. I would ask, "Why are you smiling?" And he would reply, you don't want to meditate." This helped me because I knew for sure that he was guiding me not only in regard to my actions and speech, but also in organizing my thinking process and emotions. I was afraid of thinking undesirable things. But whenever I thought of something which seemed to be bad, he continued to love me nonetheless. He never controlled my thoughts, but would gently make me aware of my thinking process. The student is always loved by his teacher. A genuine teacher never condemns his student, no matter how bad the student may be. Instead, the teacher gently helps and corrects, however much a child misbehaves. A truly loving mother will continue to tenderly care for him. Sorry, however much a child behaves, a truly loving mother will continue to tenderly care for him. As a mother raises her child with love, gentleness, and guidance, so a master raises his student. बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि इनके स्टूडेंट, इनके जो टीचर्स हैं, वो उनके थॉट्स को पढ़ सकते थे क्लियरली कि आप ये सोच रहे हो अभी, ये सोच रहे हो अभी, एंड वो यू नो वो पढ़ के थॉट्स को जेंटली गाइड करते थे कि देखो ऐसा करो। उनके क्रिटिसिज्म नहीं करते थे। ऐसा कि आपके पास जब कभी कोई सिद्धि आती है, पावरफुल वाली सिद्धि, आप उससे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, किसी को हर्ट नहीं करते हो, किसी को लेट डाउन, किसी को पुट डाउन नहीं करते हो। आप उस सिद्धि का इस्तेमाल करके उनकी सहायता करते हो। आपको पता है कि सामने वाला भी उतना ही ग्रो हो रहा है जितना आप हो रहे हो। मतलब आप तो चलो हो चुके हो थोड़े थोड़े लेवल तक ग्रो, पर सामने वाले को बहुत अभी ग्रो होना बाकी है। तो आप अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करके जिससे आप सामने वाले को एग्जैक्टली देख सकते हो, आप उसका इस्तेमाल करके उनको ग्रो करने में हेल्प करते हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ग्रेट टीचर्स उठाते हैं अपने लिए कि बिकॉज आपको इतनी सिद्धि है, आप इसका इस्तेमाल करके कैसे दूसरों की सहायता कर सकते हो। I did not know what a mother and father could give, but my master gave me everything, and he has never expected anything in return, nor had I anything to give. My love for him is immense, for he has done everything for me, educated me, trained me, and so far I have not been able to do anything for him. A master needs nothing. True spiritual leaders are like that. They take nothing and they give everything. A real teacher is he who is very selfless and who loves his students and even more than a father can love his child. A father usually imparts only worldly means, helps the children to grow, and trains them to live in the world. But a spiritual father selflessly gives that which cannot be given by a father or anyone else. I have not seen an example of this anywhere except in the spiritual tradition. Father and mother give birth, bring up, educate, and give their property. But a gurudeva gives to his disciples that knowledge which comes through his direct experience.
Imparting such knowledge is a yoga tradition, exactly like a father handing over his property to his sons. A master's divine love is not that of human love, but is something which only the heart and never the mind is capable of understanding. In a true spiritual tradition, the teacher gives so much to his student that the student's life is overwhelmed and transformed. कितना अच्छा बताया ना उन्होंने कि ये बेसिकली अभी कंपेयर कर रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल टीचर या एक स्पिरिचुअल फादर जो होता है एंड एक रियल फादर के देने में कितना फर्क है। एक रियल फादर जो है वो प्रॉपर्टी देते हैं, एजुकेशन देते हैं, मतलब रेस करते हैं, खाना पीना देते हैं वगैरह वगैरह, राइट, विच इज वर्ल्डली टू अ गुड डिग्री। उससे ज्यादा एक नॉर्मल फादर नहीं दे सकता, मतलब प्यार देगा अपना, बट दैट आल्सो कम्स विद अटैचमेंट टू अ गुड डिग्री। एक स्पिरिचुअल फादर, एक स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है, ये मतलब इसमें बता रहे हैं कि वो अपना जो डायरेक्ट रियलाइजेशन होता है वो पास ऑन करते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब वो उनका अचीवमेंट होता है जो वो पास ऑन करते हैं उनको, और ये सोल के लिए होता है। एनरिचमेंट जो स्पिरिचुअल मास्टर देता है वो पेरेंट्स नहीं दे सकते, बिकॉज पेरेंट्स आइडियली स्पीकिंग आर नॉट स्पिरिचुअली एनलाइटन, राइट। बट स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल एनलाइटन मतलब वो ही रियली गिव्स द रियल यू। द रियल यू, आप जो सच में हो, दैट इज नॉट द बॉडी, दैट इज नॉट द माइंड, दैट इज द सोल। तो सोल का जो के लिए जो फूड के लिए जो चीजें आती हैं वो स्पिरिचुअल मास्टर आपको देता है, वर्सेस जो आपको इनसे आती हैं, क्या बोलते हैं, पेरेंट्स से आती हैं। उसमें कुछ सही गलत नहीं है, बस ये है कि यहाँ से जो आता है वो अलग है, यहाँ से जो आता है वो अलग है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का एक्चुअली, अलग अलग चीजें हैं, दैट्स दैट, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों की रिक्वायरमेंट है। लेट्स नॉट से कि ये ज्यादा अच्छा है या फिर ये, भैया कि ये ज्यादा परमानेंट है। आपको जो स्पिरिचुअल टीचर से मिलता है वो ज्यादा परमानेंट होता है, एम आई राइट, वर्सेस जो आपको फिजिकल पेरेंट से मिलता है वो एक इनकारनेशन के लिए होगा। स्पिरिचुअल टीचर से जो मिलता है वो इनकारनेशन के लिए होता है और आपको एम्पावर करता है कि आप भी आगे ये बांट सकें, समथिंग लाइक दैट, मेक्स यू वेरी केपेबल। After staying with my master for a good while, I was sent to live with my brother disciple at Gangotri. He started teaching me scriptures. He loved me, but he did not understand my rebelliousness or condone my constant arguing with other sadhus. He would send adverse messages to my master about my behavior, and my master would then come and take me with him for a while. Later, he would send me back to my brother disciple. I was also unhappy when I was in a situation in which I had to stay with a family guest. But fortunately, this rarely happened. One day, I was curious to know about my brother disciple's life, and I repeatedly asked him questions about his birthplace. I did not know about that renunciates never discuss their past. But on my instance, he told me about his birthplace. Masters and sages do not want to recall their past, nor do they attach much importance to birthdays, age, or birthplace. They dislike talking about the members of their blood families. When the initiation ceremony is performed, the renunciate himself performs his last rites and then deliberately forgets about his birthplace and the people with whom he has previously lived. It is a custom in the renunciate orders to not discuss one's past. They call they call it the dead past and consider themselves reborn. I posed the same question to my master, and after several persistent requests, he did tell me something about his life. He reported that he was born to a Brahmin family of West Bengal. The members of his family were
initiates of a sage who used to come down from the Himalayas at times and travel in that area. My master was the only son of his parents. Basically उनके मास्टर ने जो है इस बार सो बेसिकली इनके जो ब्रदर डिसाइपल हैं उनकी लाइफ जो है उन्होंने डिस्कस की। ब्रदर उनके जो ब्रदर डिसाइपल्स थे तो ये क्या बता रहे हैं कि सेंट एंड साधुस जो हैं वो अपना जो है लाइफ को डिस्कस नहीं करते किसी के भी साथ। आई थिंक फॉर अ गुड रीजन। रिमेंबर आप आपने कभी कोई सेरेमनी दे शायद सुना होगा कि फ्री मेसनरी जो होती है उसमें भी सिंबॉलिक सेरेमनीज होती हैं। जैसे कि यू आर कंप्लीटली नेकेड इन सेरेमनी नंबर आई थिंक फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, आई डोंट नो कि कौन सी होती है। उनकी जो इनिशिएशन है इनिशिएशन में दे symbolically go from a dark room. They symbolically come out naked. They symbolically come out this and do that. इनके symbolic meanings जो होते हैं वो ये होते हैं कि they are now they have passed through a dark time and उन्होंने truth की teaching को पकड़ के they came somewhere, you know, to the light. नेकेड का मतलब ये होता है कि दे लेट गो ऑफ ऑल देयर पास्ट एंड देयर बैगेजेस। सो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं इनके, सिंबॉलिक होते हैं। इस तरह से कोई भी इनिशिएशन सेरेमनी जो होती है इसी चीज को सिंबलाइज करती है कि आप क्या चीज ओवरकम करके या क्या चीज तोड़ के या छोड़ के नाउ यू कमिंग टू अ न्यू लाइफ। बिकॉज इनिशिएशन की जो लाइफ होती है वो सोल सेंट्रिक लाइफ होती है, बॉडी सेंट्रिक लाइफ नहीं होती है। इसीलिए जब आप इनिशिएशन लेते हो उसमें से एक जो चीज होती है उसको बोलते हैं सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब नो इंटिमेसी और नो सेक्सुअल लाइफ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इनिशिएशन सेरेमनी लेने के बाद यू टॉट सर्टेन प्रैक्टिसेस की इस एनर्जी को कैसे कल्टीवेट किया जाए कि आपकी वो डिजायर्स में फ्लो ना हो बल्कि ऊपर जाके सोल को फीड करे। जहां भी जो भी प्रॉपर स्कूल में इनिशिएशन लोगे, कहीं भी लोगे, अगर वो कस्टमरी है कि ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य इज नॉट द वर्ड, सेलिबेसी, वहां पे दे विल गिव यू इन द दीक्षा और इन द टीचिंग एक टेक्निक उसमें पक्का होगी कि आप जो सेक्स एनर्जी जिसको बोलते हैं उसको आप कैसे प्रॉपरली चैनल करो कि वो सोल के बेनिफिट के लिए यूज हो। अब इट्स कस्टमरी, होता है ये प्रॉपर स्पिरिचुअल स्कूल्स में होता है ये वाला, राइट। अच्छा, सो उन्होंने अपने मास्टर से भी मतलब पूछा था ये वाला सवाल। तो उन्होंने बताया था कि वो ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे वेस्ट बंगाल में। तो उन्होंने अपने ब्रदर डिसाइबल से भी पूछा था, मास्टर से भी पूछा था, एंड the members of his family were initiates of a sage who used to come down from the Himalayas at times and travel in that area. My master was the only son of his parents and he became orphaned at a young age. He was then adopted by this advanced sage. My master was about 80 years of age when he related this story to me. He has a Bengali accent, and although he did not use his native language, he did sometimes sing Bengali songs. He is a Sanskrit scholar and knows English and several other languages. Swami Rama is a young brahmachari. Handsome guy, no? Handsome guy. Anyway, let's go ahead. But he looks like, you know, like a guy who is seeing through you. He is like seeing through you. Once during my travels in Bengal, I visited my master's birthplace. There was no trace of his house, and I thought of building a memorial in his name there. But he instructed me not to do so. In the village, no one knew anything about him except two old ladies in their 80s. They reported that a master from the Himalayas came and took him away when he was 14 years of age. Indeed, we do remember him, they said.
and were curious to know if he still lived, where he was, and what he had done with his life. My master lives in a cave, coming out only once in the morning at sunrise and returning to his seat after an hour. Twice a day he gets up from his seat. Sometimes he walks outside the cave, but at other times he won't come out at all for days at a time. There are 3 to 5 advanced students with him all the time. For 3 months in the winter, my master and his disciples come down to a height of 7,000 to 8,000 feet. We come down to a height. मतलब बहुत ही ऊपर रहते हैं actually. He sometimes travels to Nepal and stays for a few months 7 miles from Namcha Barbar. बेसिकली वो ये बताना कि अब वो अपने मास्टर के डिस्क्रिप्शन पे आ गए कि मेरे मास्टर जहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ रहते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन पे आ गए हैं अभी. He generally drink drinks goat's milk and at times the milk of a tiny black Shama cow, a pet who's looked after by the students there. From time to time, I would give my master a drink of half water and half goat's milk. I gave it to him without asking for it, and if I saw what he did, and if I saw that he did not take it, I took it away. Later, I would give him more. This was his only food. ये बहुत ज़रूरी है, पता है. ये इससे ज़रूरी है कि जानना, क्योंकि अगर आप स्वामी शिवानंदा की अगर बुक पढ़ेंगे तो स्वामी शिवानंदा ने इसमें बहुत क्लियरली अपनी बुक्स में लिखा हुआ है कि जो है गोट का जो मिल्क, काउज मिल्क, क्योंकि काव का जो मिल्क है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो काव के मिल्क को प्लीज ढंग से सेवन कीजिए उसका. अब प्रॉब्लम है कि आज की डेट में रियल काव का मिल्क बहुत कम, मतलब रियल काव का मिल्क जो है वो बहुत कम मिलता है. एक सेकंड प्रॉब्लम है कि काउस आर इंजेक्टेड विद सो मच ऑफ ट्रैश कि वो मिल्क मिल्क नहीं रहता है, वो पता नहीं क्या बन जाता है एक्चुअली. तीसरा जो है काव का खाना जो होता है वो फीडर्स जो खिलाते हैं ना, वो जो फीडिंग जो होती है, फीड्स, वो फीड्स भी इंडस्ट्री में प्रोसेस होती है आजकल. तो काव के इनटेक से लेके बॉडी में इंजेक्शन से लेके मिल्क में और क्या क्या वो डालते हैं, तो एक्चुअली जब तक मिल्क पहुंचता था वो मिल्क मिल्क नहीं रहता है. मतलब अनलेस यू गेट अ काव जो कि जंगली काव हो प्रॉपरली, एंड यू गेट टू हैव दैट काव जिसने कि कुछ उसको लगाया ना हो, कुछ ना किया हो, नेचुरल वो खाती है और वो करती है, ग्रेजिंग काउस, उसका जो मिल्क होगा वो बहुत प्योर मिल्क होगा. दैट मेक्स मोर सेंस. उससे आपको इंटॉलरेंस वगैरह नहीं होगा. जब गाय को माता बोलते हैं इंडिया में, तो उसके खाने से प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? इट डज मेक सेंस. वो तब प्रॉब्लम होती है जबकि उसमें गंद मिलाया गया हो सालों 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 तक. वो गंद बॉडी के साथ रिएक्ट करता है, मिल्क रिएक्ट नहीं करता है. समझ में आ रही है बात? एक टाइम पे मैं चेक कर रहा था एक्चुअली कि स्कैनिंग करके कि कितना अगर मिल्क जो है, लेट्स एक्चुअली चेक. आप में से जितने लोगों को स्कैनिंग आती है, लेट्स ट्राई इट आउट राइट नाउ, ठीक है? आपके जैसे कि महाराष्ट्र में एक मिल्क पैकेट आता है चितले, ठीक है? बैंगलोर में आता है नंदिनी का पैकेट, ठीक है? आपके वहां पे जो भी पैकेट आते हैं, एक पैकेट को पकड़ लीजिए इन योर माइंड से कि आधा लीटर का मिल्क का पैकेट है. आप लोग ये स्कैन कीजिए अपनी स्कैनिंग, अगर आपको आती है स्कैनिंग करना, तो कि कितना परसेंट मिल्क जो है आधे लीटर में से काव में से आता है. बाकी का जहां से भी आता है पता नहीं, बट उसमें से कितना वॉल्यूम ये जो है आधे लीटर पैकेट में से काव की बॉडी से आया है. चेक कीजिए. सपोज ये कीजिए कि 100% है ये, अब कितना परसेंट जो है काव की बॉडी से निकला है, यू रियलाइज. अलग अलग, जैसे कि मेरी स्कैनिंग के साथ आता है कि नंदिनी में जो है, जो पैकेट आता है, अबाउट 20 to 25% जो है वो काऊ की बॉडी से निकला है. उतना भी नहीं हुआ एक्चुअली. सॉरी, 15% अप्रोक्सीमेटली काऊ की बॉडी से निकला है. बाकी पता नहीं क्या है, आई हैव नो आइडिया.
बट आई होप यू आर एबल टू ऑल्सो स्कैन इन योर सेल्फ कि आप एक्चुअल स्कैनिंग कर सकें प्रॉपरली. या 10%, 15% उतना ही आता है, राइट? 60 नॉट बैड यार. बड़ी अच्छी खाओगी आपकी वहां तो. नॉट बैड. एनीवेज, सो हाँ, समथिंग लाइक दैट, राइट? अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब ग्रेट टीचर्स ने जब कोई बात बोली थी तो वो बहुत प्योर फॉर्म में मतलब बोली थी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका डिस्टॉर्शन हो चुका है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. आप जरा एक बात सोचिए, ऑनेस्टली थिंक अबाउट फॉर वाइल. जितने लोग हैं, मिल्क का यूज कहाँ कहाँ होता है? प्रोडक्शन में, केक्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, ब्ला ब्ला, सब जगह पे. दूध में, चाय में, कॉफी में, जहाँ कहाँ मिल्क का यूज होता है. और इतने सारे पैकेट्स, इतने सारे पैकेट्स. उतनी गाय हैं भी. उतनी गाय हैं भी. थिंक अबाउट. आगे चलते हैं. Once during my travels in Bengal, I visited my father's birth. I think we talked about it, yeah. My master remains in Sahaj Samadhi, a constant state of deep meditation, and speaks very little. We once lived together for 9 months and hardly talked at all. Most of the time, we sat with closed eyes in meditation. I did my work and he did his work. There was no occasion for talking. Understanding was there, so oral communication was not necessary. When understanding is not present, then talk is needed in order to relate. But language is a poor means of communication. There was already communication on a deeper level, so there was no necessity for talking. My master and I believed more in silent communication. He answered my silly question with a smile. He talked very little, but created an atmosphere for my growth. Some people call my master Bengali Baba, and some simply know him as Babaji. I call my Gurudeva Master because I have no word more suitable than this. My love for him is like an eternal law. I never found him unrealistic in what he taught me, and I have never found him selfish in any way. All his teachings, through his actions, speech, and silence, were full of divine love. My words are inadequate to comprehend his greatness. I devoutly believe him to be a yogi of immortal wisdom and to be one of the greatest masters of the Himalayas. His reason for living is to enlighten those who are prepared and to love, protect, and guide those who are still preparing. Anyone in difficulty who remembers him is helped. I know this, for many times it has happened to me and several others. देखो, इन्होंने ना बहुत स्मार्टली अपने मास्टर का नाम नहीं दिया. बंगाली बाबा या बाबा जी के नाम से मतलब ऐसे ऐसे बोला है, बट मास्टर का नाम नहीं दिया. Whenever I find time from my busy schedule, I have a strong desire to go back to him, for he is my only guide. With all possible reverence and devotion, I pay homage to him wherever I am. If I commit mistakes, they are mine. But if there's anything good in my life, it comes from him. Wow, that's amazing. हम एक काम करते हैं, अगले 3 मिनट हैं. We'll do a short meditation right now. Everyone, sit still, back straight. अपने हार्ट और अपने, यहाँ पे हार्ट चक्रा होता है सामने, यहाँ पे होता है क्राउन चक्रा. 2 पॉइंट्स पे अपना फोकस लगाइए, हार्ट और अपने क्राउन चक्रा पे. एंड स्वामी रामा के जो मास्टर हैं, स्वामी रामा के जो गुरु जी जो हैं, उनसे ब्लेसिंग लेंगे अपने हार्ट और अपने क्राउन चक्र पे फोकस करके कि ओ ग्रेट मास्टर
of Swami Rama. Thank you for blessing all of us with deep love and kindness, great joy and happiness, divine peace, understanding, harmony, goodwill, and the will to do good. Thank you for your great blessing. अब अपने हेड के ऊपर एक पॉइंट ऑफ लाइट को इमेजिन कीजिए, छोटा सा स्टार इमेजिन कीजिए हेड के जस्ट ऊपर, एंड हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। आप वो पॉइंट ऑफ लाइट को देखिएगा, ठीक है? Be still. Thank you, thank you, thank you. Good. Let's do a closing prayer. To the Supreme God, to the Great Divine Father, Great Divine Mother, thank you for your great blessings. Thank you so much to our spiritual teacher, to all the spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great, great ones. We very, very humbly thank you for your great blessings. Thank you so much. अगली बार सैटरडे को मिलेंगे। ये ओपन सेशन है, सब लोगों के लिए ओपन है, इसको स्प्रेड कीजिए, लोगों को बुलाइए, फ्री सेशन है ये वाला, ठीक है? टेक केयर, सी यू, बाय बाय।